सर हमने वो परफॉर्म किया प्रैक्टिकल। सर एक थोड़ा सा डाउट है उसमें, मतलब वो जो है ना, फाइनल फंक्शन परफॉर्म ही नहीं हो रहा है उसमें। तो आप सर थोड़ा देख लेंगे क्या उसको? वो लास्ट पे देखेंगे। ओके। 15 मिनट्स पे याद कर देना। ठीक है वो सर। देख लेंगे उसको। ठीक है। ऑल राइट। सो EIGRP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. That is the full form. We call it hybrid routing protocol. Why? Because it performs routing very fast. Okay, compared to RIP, compared to OSPF, this routing protocol, it basically figures out the best route for destination networks very fast. Means when you will configure it, from that point onwards, it will start to calculate the best route to go to the destination networks. So when we talk about dynamic routing protocols, this one, since it performs very fast, the routing, that is why we call it hybrid. Okay. It is basically developed by Cisco, and they made it proprietary. Proprietary means that only on Cisco devices, means if you're having a Cisco router, then only you can configure it. If you're having a non-Cisco router, you cannot configure it. Earlier it was like that. Means if you have in your network all the routers, that is Cisco, then only you can configure EIGRP. If you're having a different company router, then you cannot configure. Earlier it was like that. Because it performs routing very fast, that is why it is now supported in non-Cisco devices as well. Cisco has made it open standard. Open standard means it is open for different companies' routers also. You can configure EIGRP. So it's not like that you must have a Cisco router to configure EIGRP. If you have a Juniper router or D-Link router, for example, different other manufacturers' routers, they also have support of EIGRP. You can use it. In EIGRP, routers build neighbor relationship. This is what we call as adjacency. So neighbor relationship means that this device, gateway 1, it will neighbor with router 1. Okay, means these two devices, they need to be neighbors. They need to be neighbor with each other. Similarly, router 1, they need to be neighbor with gateway 2 needs to be neighbor with router 1. Okay. When these routers, they make neighbor relationship, that is what we call as adjacency. Adjacency. So adjacency is nothing but the neighbor relationship which exists between routers in EIGRP. Okay. So this neighbor relationship, it must be there between your routers. Why? Because when they make neighbor relationship, then only they share the routing table. Okay. Routing table sharing, it will be done only when two routers, they become neighbors. If they are not neighbors, there is no sharing. If they are neighbors, then only they will share routing table. And we know that in dynamic routing table is always shared. Okay, but this is the criteria here in EIGRP. And similar criteria is there in OSPF as well. Okay, in OSPF also you have neighbor relationship, adjacency. It needs to be there between two routers. Then only they will share the routing table. Okay, so the same concept is also available in OSPF as well. So this is the point here, that once neighbor relationship is formed between routers running EIGRP, then only routers will share the routing table with each other. So whatever routing table informations they have it, they will share it with other router when this adjacency is there between routers. Now EIGRP uses something called autonomous system concept.
Now, what is autonomous system? It's a group of IP networks. Group. For example, that is our 4 LANs we have, LAN 1, 2, 3, 4. And all these 4 LANs are coming in one group. Okay. This group is called as autonomous system. In short, we call it AS. When you configure EIGRP, always EIGRP performs routing in group of IP networks. So it is always important that you identify the group of your IP networks with a number. This number is called as autonomous system number. Okay. Every single group of these IP networks are identified using this autonomous system number. And EIGRP always performs routing in group of IP networks, like this LAN 1 and this LAN 2, this LAN 3, this LAN 4. These are all coming in one group to perform routing by EIGRP. The autonomous system is getting identified using autonomous system number. That is what we call ASN. And this ASN is a 16-bit number, which ranges from 0 to 65535. 2 raised to 16, that is 16 bits. So 2 raised to 16 is 65,536. Means this many autonomous system numbers we can have in EIGRP. Means you can configure 65,536 groups of IP networks in your router. But this zero number is reserved for experiment and research purpose. Means you cannot use this zero. When you will configure EIGRP, you will not use autonomous system number 0 to define your group of IP networks. Always autonomous system number 0 is reserved for experiment research. So two types of autonomous system number we have, that is public and private. Public autonomous system number ranges from 1 to 64511 and private autonomous system number ranges from 64512 to 65535. So public autonomous system number and private autonomous system number, these are similar concept, like public IP and private IP. Okay. So public IP is chargeable. Public autonomous system number is also chargeable. It's paid. Means if you want to use a public autonomous system number, then you have to pay Cisco charges to use these numbers. Because they have developed it. That is why you have to pay Cisco. But private autonomous system numbers are free of cost. Means you can use it in your private network to perform routing. But for that, you don't have to pay any charges. So this is something which is coming here, which is the same concept like public IP and private IP. Public IP is chargeable. Here, public autonomous system is chargeable. Private IP is free. Here, private autonomous system number is free. You have to remember these ranges. So autonomous system number, it needs to be same in your routers. Means if you are configuring this router with autonomous system number of 64511, then this router also should be configured with autonomous system number 64511. This router also autonomous system number 64511. Then only they can perform routing. They can share routing table. They can build a neighbor relationship. That is the adjacency. If any of these routers autonomous system number is different, let's say that this is 64512, there will not be any neighbor relationship. Okay. So different autonomous system numbers, routers, they cannot form neighbor relationship. Okay. In order to form neighbor relationship, always your router's autonomous system number, it needs to be same. It means that if you are configuring one autonomous system number here, the same number you have to configure in all the routers. So 5 types of packets we have in EIGRP. Hello packet, which is used to form neighbor relationship. Okay. What happens here, that is this router, it sends a hello packet to this router 1. And router 1
sends a hello packet back to gateway 1. Okay. When this sends this hello packet, that is when they come to know that this router is in which autonomous system, this router is in which autonomous system. So all these informations are sent in the hello packet. And this is the first packet, what helps EIGRP to form neighbor relationship. Okay. Hello packet is always used to form neighbor relationship. Once the neighbor relationship is built, then routing table informations are shared using update packet. Okay. This update packet is used to share routing table informations. Means gateway 1 will share its routing table informations with the update packet to router 1. Router 1 will share its routing table informations with the update packet to gateway 1. So update packet is always used for sharing routing table informations. Now, query, reply, and acknowledgement. These three packets basically is used in this situation when we have a network which is unreachable or is not working. Unreachable. Okay. Or down. Let's say that this gateway 2 router, which is connected to the switch on this LAN number 4, there is some problem in the cable, like cable is not working. So if there is some problem in the cable, means gateway 2 cannot communicate to LAN 4. So for gateway 2, it is unreachable. So in this situation, when a network goes unreachable and you are running EIGRP on your router, then what EIGRP is doing, that is from gateway 2, it is sending a query packet. It is sending a query packet to router 1 because router 1 is the neighbor of gateway 2. So it is sending a query packet. Now this query is about querying this unreachable network LAN 4. Means it is asking router 1 that whether router 1 knows any route to communicate to LAN 4 or not. Because it cannot communicate. So it is asking its neighbor whether router 1 can communicate to LAN 4 or not. So since router 1 doesn't have any connection to LAN 4 here, it is a single connection which is connected to gateway 2 and the connection is not working now because the cable is down. So in this situation, the router 1 will not give any reply. Okay. So if router 1 knows any route, then only it will give the reply. If it doesn't know any route, it will not give the reply. Okay. So let's assume that router 1 knows any route to LAN 4. So it is giving the reply. So when this reply is given, then gateway 2 gives the acknowledgement. That is what we called ACK. ACK means acknowledgement. It is simply just the response of the reply. Means whatever reply router 1 is giving to gateway 2 is acknowledging it. So in this particular situation, these three packets are used: query packet, reply packet, and acknowledgement packet. Okay. And all these three packets are used when a network is down for EHRP or it is unreachable. और सर ये कब यूज होता है, मतलब डाउन होता है फिर यूज, मतलब समझ नहीं आया मुझे नहीं। जैसे कि तुम्हारे ये जो गेटवे 2 है, ये तो इस केबल से कनेक्टेड है, राइट? ये वाला केबल से लैन फोर्स से कनेक्टेड है, करेक्ट? राइट। अगर ये केबल पे कुछ दिक्कत आ गया, जैसे कि मान लो कि केबल टूट गया, ओके, तो फिर क्या होगा? गेटवे 2 कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा लैन 4 के साथ, हाँ सर। करेक्ट? तो करेक्ट। इस सिचुएशन पे क्या करेगा? ये इसका जो कनेक्टेड जो राउटर है, ये तुम्हारा राउटर 1 है, ठीक है? तो राउटर 1 गेटवे 2 का क्या हुआ? नाइबर हुआ, यस। राइट? तो ये अपने नाइबर को पूछेगा, ओके, कैसे पूछेगा? बाय सेंडिंग क्वेरी, ओके, क्वेरी पैकेट को यूज करेगा।
ओके, ये पूछने के लिए कि ये राउटर को LAN 4 के बारे में कोई रूट पता है कि नहीं। ओके, ओके तो अगर राउटर 1 को रूट पता है तो फिर वो क्या करेगा, वो रिप्लाई प्रोवाइड करेगा। ओके, लेकिन अगर उसको रूट पता नहीं है तो फिर वो रिप्लाई नहीं देगा। तो अगर रिप्लाई आता है गेटवे 2 पे, मान लो कि राउटर 1 को पता है LAN 4 पे कैसे कम्युनिकेट करना है, तो फिर वो रिप्लाई प्रोवाइड करेगा। तो रिप्लाई के बेसिस पे ये क्या करेगा, एक्नॉलेज करेगा रिप्लाई को। ओके, कि उसका जो रिप्लाई है उसको मिल गया है, ये एक्नॉलेज देगा, एक्नॉलेजमेंट। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस पे तुम्हारी क्वेरी, रिप्लाई और एक्नॉलेजमेंट यूज किए जाते हैं। ओके ओके सर, अंडरस्टूड? अंडरस्टूड। ऑल राइट। तो वाइल्ड कार्ड मास्क इज यूज्ड, EIGRP uses wildcard mask, which is exactly the opposite of subnet mask. अभी wildcard mask basically is used to match the network and host bits. Okay, there is a formula we have to calculate wildcard mask, and that is all 255 minus subnet mask. That is your wildcard. Okay. For example, if we need to find the wildcard mask of class A, class B, and class C, so the same formula we can use to calculate it. For example, class A, you can see the class A subnet mask. When you subtract it, you are getting, this is your wildcard. This is our class B subnet mask. When you subtract it, you are getting it wildcard. And when you subtract class C subnet mask from this, you are getting class C wildcard. Okay. So all these wildcard mask always EIGRP uses. Okay. Basically, this wildcard mask concept you will get to know in access control list, which we will discuss in the next session. But for now, just remember the formula, okay, to calculate wildcard. Why we say it is opposite of subnet mask? Because if you see subnet mask here, that is the class A subnet mask. First octet is 255. You can see first octet is 0 in wildcard. But in subnet mask, you can see 0, 0, 0. And in wildcard, you can see 255, 255, 255. Means whichever octet you are seeing 0 in subnet mask, the same octet you are seeing 255. And whichever octet you are seeing 255 in subnet mask, you are seeing 0. That is why we call it opposite of subnet mask. So when you do EIGRP configuration, you can either use subnet mask to configure all the network addresses, or you can use the wildcard mask to configure EIGRP. Okay. So if you are using subnet mask, okay, if you are using subnet mask, then automatically it will be converted to wildcard using this formula. Okay. Now, who performs this conversion? This is your Cisco IOS. Cisco IOS will automatically convert your subnet mask to wildcard mask. Means if you are configuring EIGRP with subnet mask, then automatically it will be converted into wildcard. And that is your Cisco IOS, which will perform that. Okay. So that is why either you can configure the network address using subnet mask in EIGRP, or you can use wildcard mask. It is totally up to you. Support a maximum hop count limit of 255. Means if you are having 256 number of routers, for example, in our RIP, we are having 16, maximum router 16 we can have. But in EIGRP, we are having maximum routers 256. Okay. And we can configure EIGRP routing in it. But whenever we calculate the hop count, that is always -1 of the total number of routers. So that is the maximum number of routers, 256 minus 1 is your 255. So up to 255 hop count limit, you can perform routing with the EIGRP. That is why we always use it in medium-sized networks, okay, to perform routing. Small network, RIP, you can use static routing also.
in small networks, but medium-sized network always go for EIGRP. Three tables it maintains. One is called neighbor table, one is called topology table, one is called shortest path table. In other words, we call it routing table. Neighbor table, it always contains the informations about all the neighbors of your router. For example, gateway 1 neighbor is router 1. So in the neighbor table of gateway 1, router 1's informations will be there. Router 1 neighbor table will contain information about gateway 1 and gateway 2 because these two routers are neighbor with router 1. So both the routers informations you will find in the neighbor table of router 1. Gateway 2 neighbor is router 1. So router 1's informations will be there in the gateway 2 neighbor table. Means neighbor table always contains the list of all the neighbors to whom your router is connected. तो जो राउटर के साथ जो राउटर कनेक्टेड है वो बेसिकली उसका नाइबर ही होता है और उसी नाइबर्स के इंफॉर्मेशंस वो अपने नाइबर टेबल पे स्टोर करके रखता है. फिर टोपोलॉजी टेबल basically contains informations about all the routes of your network topology. Okay, मतलब जैसे कि मान लो कि गेटवे 1 और ये गेटवे 2 दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है ओवर ए केबल. Okay, there is a cable which is connecting gateway 1 and gateway 2. So right now, to communicate to LAN 4, which is the destination, this router is having two routes. One is the primary one, that is the direct from gateway 1 to gateway 2 to LAN 4. So that is your primary route. And another one is via router 1, via gateway 2 to the destination. So that is your secondary. Secondary route. So obviously, the primary route is preferred because this one is the best. This one is the best route. Okay. So when we talk about the topology table in EIGRP, topology table, this table contains the primary and the secondary information. Okay, means जो रूट्स तुम्हारे प्राइमरी हैं, जो रूट्स तुम्हारे सेकेंडरी हैं तुम्हारे टोपोलॉजी पे, वो सारे इंफॉर्मेशंस अपने टोपोलॉजी टेबल पे स्टोर करके रखेगा. ओके, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट टेबल कौन सा है? शॉर्टेस्ट पाथ टेबल और राउटिंग टेबल. द शॉर्टेस्ट पाथ टेबल और राउटिंग टेबल contains, that is your, let me just write it here. Routing table. It only contains the primary route informations, means the best route. Okay, no secondary route. That is basically you have the difference between these two table. Topology table और routing table पे difference इतना ही है कि topology table पे जितने भी routes हैं destination पे जाने के लिए, primary हो secondary हो, सारे informations उस पे store किए जाते हैं. और routing table, that is called shortest path table as well, it is storing only the best route. Okay, only the best route informations. So EIGRP always maintains all these tables. Okay, अभी configuration देख लो. Configuration of EIGRP is very simple. First of all, you say router EIGRP command and the autonomous system number. So you can take any autonomous system number from public range, private range, but make sure that whatever number you are using, that number you have to configure in all the routers. Okay, मतलब गेटवे 1 पे भी तुम्हें सेम नंबर कॉन्फ़िगर करना है, राउटर 1 पे भी, गेटवे 2 पे भी.
Then you have these network commands. So obviously in dynamic routing, always we configure connected networks like LAN 1, LAN 2, which is connected to gateway 1. We're simply just configuring that. Okay. तो ये तुम्हारे नेटवर्क एड्रेस, फिर सबनेट मास्क या वाइल्ड कार्ड मास्क। तो कॉन्फ़िगर तुम्हें जब करना है तुम्हारा नेटवर्क एड्रेस, तो कनेक्टेड नेटवर्क जो जो है वही तुम्हें कॉन्फ़िगर करना है। आइदर सबनेट मास्क डाल दो या वाइल्ड कार्ड मास्क। If you want to use wildcard mask, then you have to perform the calculation of wildcard mask first. Then only you have to write it. Otherwise, you can write the subnet mask and automatically it will be converted to wildcard. Then no auto summary. There's no auto summary command, that is to deactivate auto summarization. In RIP also we have seen we are giving the same command, and in EIGRP also we have the same command. Now coming to the configurations of gateway 1. This is your base configuration of IP. And this is what the EIGRP configuration, that is our 65111 autonomous system number. Network we have 192.168.100.0, that is LAN 1, and this is our subnet mask. Then the network 192.168.101.0, then subnet mask. Then auto summary, and we're saying exit. Okay. So these are the two connected networks of gateway 1, LAN 1, and LAN 2. We give it in EIGRP, and that's it. Then router 1 configuration, that is your base IP configuration. Then the same number, you can see that the same number I'm using. Now router 1 is connected to LAN 2 and LAN 3. So this is your LAN 2 and 3 network ID and subnet mask. And we are giving node summary and we are saying exit. And coming to gateway 2, the same configurations, autonomous system number, gateway 2 is connected to LAN 3 and LAN 4. So that is your subnet mask. We say an auto summary and exit. So once we do all these configurations, your EIGRP routing will be, it will be performed. Okay. So I will simply just copy and paste all these things. But before that, you guys take the screenshot of all this. Taken. No, sir. I'm not. Take this next. Okay. Yes, sir. Then take this next. Taken, sir. Then take the next. Done. Yes, sir. And gateway 1 configuration. Taken. Router 1 configuration. इसी का नेट चला रहा हूँ, क्लास कर रहा हूँ मैं। कोई बात तो होता Taken. Yes, sir. And gateway 2. Taken. Yes, sir. All right. Taken. Now, these are your verification commands, what we are going to be using. First of all, we'll be using show IP root command, show IP protocols command, show IP EIGRP neighbor command, show running hyphen config command. Okay. These 4 commands we are going to be using today for verification purpose. Take the screenshot. Taken, sir. Everyone taken, right? Okay.
So let me just so that is our gateway one. Interface, everything is correct. 0/0, 101.1, 65,111. Okay, so everything looks correct. I will simply just copy from here and go to gateway one and paste it. Now take the screenshot of this. Yes, sir. Now going to gateway two, sorry, router one. So that is your router one. Enable config key, router one is correct. 0/1 is having 102.1. 0/0 is having 101.2. Yeah, JRP. Okay, all these things are correct. Simply copy. And paste it. Take the screenshot. Taken. Take care. Yes, sir. Now Yes, sir, moving on to taken. the last router. Last router is gateway 2. So that is our gateway 2. Fast Ethernet 0/1 is having 103.1. And 0/0 is having 102.2. Correct. So let's copy. Going to gateway 2, CLI. Say no. And paste. Take it. Taken. Take care. Yes, sir, taken. All right. So now we are going to be verifying. So the verification process we're going to be doing using these 4 commands. So if I open any of these routers, can you see a message here? Can you see this message? This message says what? Neighbor 192.168.101.2 is up. New adjacency. Can you see this? Adjacency means what? Adjacency means neighbor relationship. Okay. Neighbor relationship is called adjacency. And who is your neighbor? 101.2. One at No. Which router is this? Which router is this? Gateway 1. Gateway No, one. no, Gateway 2. no. Which router is this? Router 1. This is router 1 IP, right? Yes, sir. This is 101.1. This is 101.2, right? Router 1. So that is your neighbor. But can you see this? Dual. This dual is basically the algorithm what our IP uses. EIGRP uses. Okay. Dual basically stands for diffusing. Update. Algorithm. Okay. Diffusing update algorithm. This DU, that is your diffusing update, and this is your algorithm. This algorithm, it is used by EIGRP to figure out the best route to form neighbor relationship. All these things are coming from this tool.
NBR means what? Neighbor change. Means earlier there was no neighbor with gateway 1. Right now we have a neighbor, that is router 1. So that is a change in neighbor relationship. So remember the name of the algorithm. From the interview perspective, these are very important. Okay, now we are going to check the routing table, show IP route. And we can see that gateway 1 is connected to LAN 1 and LAN 2. So that is your C. C means connected route. But LAN 3 and 4, it is not connected. So it is getting it via EIGRP route. So this D means what? EIGRP. Okay. Yesterday we have seen RIP. Okay. R was mentioned. But right now we are seeing EIGRP. This D means EIGRP. Okay. And we can see the next hop address, it is set to router 1. So we can use this command called show IP protocols to verify our EIGRP configuration. We are running EIGRP 65111, where exactly we are doing routing for our networks LAN number 1 and LAN number 2. And the router from which we are getting our routing informations, that is your router 1. You can see that 101.2 here. So this is very useful command. Okay, yesterday also we have seen that when we are using RIP, then how exactly this command is giving us informations about RIP configurations. Take the screenshot of it. Taken. Everyone taken, right? Yes, sir. Yes, sir. Then use this command called show IP EIGRP neighbor. That is the command to check your neighbor table. Okay, as you can see that your routing information source is this. This is the router. That is your neighbor. Okay, you can see that. So that is your EIGRP neighbors for process 65111. Because this is gateway 1 connected to router 1 only. That is why you are seeing only one neighbor IP address here. But if you do the same thing in router 1, okay, you will see that two neighbors are there. One will be gateway 1, one will be gateway 2. So that is router 1 neighbor table looks like this. So you can see that two neighbors are there. That is 101.1, that is the gateway 1, and 102.2, that is the gateway 2. Okay. So this neighbor table always gives you information about which router or number with your router. Okay, take the screenshot of it. Taken, right? Then you can use this command called show running config. Now this is the command to check the running configuration of your router. Means whatever configuration you have done on your router, if you want to see all the configurations of your router, always you can use this command, show running config. Press enter and you will see this more. This more means you will have to press enter. Keep pressing enter. You will see all the configurations of your router. You can see the IP address, what we have configured. You can see the EIGRP configurations. Okay. So whatever configuration your router is having, all the configurations you can see using this command. Take the screenshot. That is your command. Taken? Yes. Yes, sir. Taken. All right. So when you keep pressing enter, you will go down. Okay. When you see this end means it is the end of the configuration. So at the time you will be in your router. Okay. Again,
So unless you see this and this gateway one, all these things will not come. When you see this and you press enter, then only you will see this routers, privilege mode and all this, it will come. So since we are performing routing with the edge RP, so let's do the verification here by sending a ping to these two servers. So ping 192.168.103.2. And we can see that we're getting the replies. And let's do the ping test again to server 1 IP 103.3. And also we are getting the reply. Okay. So it means that EIGRP routing, we are performing it successfully without any problem. Okay. So what we do always is we mix up routing. Like when we do EIGRP, we also do static routing plus default routing. So again, our same topology comes up with one router here, another routers over here. And this router is getting connected with this gateway one. And we are having our network IDs coming from here. So that is our LAN number 5 with a network ID of 104. And here it is LAN number 6 with a network ID of 105. And this is our LAN number 7 with a network ID of 106. And here we have our IP address, which is 104.1. And over here we have IP address of 104.2. Here we have IP address of 105.1, 105.2, and here 106.1, 106.2. So let's make it a little bit bigger. So that is our LAN number 5. Like this. One 106.2. So what exactly I want you to do, that is, right now we are doing EIGRP in these 3 routers. So what I want you, that is, you should configure EIGRP in this 1, 2, 3, 4 routers. You should do EIGRP. Okay. In this router, you should be doing static routing. Static. In this router, you should also do static routing. Okay. And in this router, you will do default routing. It means that RIP you are running
in router 2, EIGRP you are running in router 2, router 0, gateway 1. In these 3 routers, you are running EIGRP. Okay. You can use any EIGRP autonomous system number. Okay. But this is what the topology, where you are mixing up EIGRP with static routing plus default routing. And the objective here is this PC should be able to communicate with this router, and with these servers without any problem. Understood the objective? Which routers you are running? Yes. What? Everyone got the clarity? Yes, sir. Shantanu, Yes, sir. got it, right? Taken the screenshot of it? Everyone take the screenshot, because right now you are going to do it. Remember, you are not running EIGRP in router 1 and gateway 2. You are running EIGRP in this router 2 and router 0 and gateway 1. Okay. And in router 1, gateway 2, you will configure static routing, and in router 3, you will configure default routing. Clear? Yes, sir. In EIGRP, always configure connected networks. For example, gateway 1 is connected to 3 LANs, LAN 1, LAN 2, LAN 5. Configure it in EIGRP. Router 0 is connected to LAN 5, LAN 6, LAN 7. Configure it in EIGRP. Router 2 is connected to only LAN 6, so configure it in EIGRP. Okay, like that. And for static routing and default routing, you already know how to do it. So, who will be performing this project today? Who will be doing it? Sanket is there. Sanket. Nandini. Yes, who has logged in with the system? Aditya. Akanksha. No, sir, I have not logged in. Who has logged in? किसने लॉगिन लिया सिस्टम से? दिनेश, गौतम. Yes, who has logged in? Jasim is there. Jasim. No, sir, I'm not logging with laptop. क्यों? क्यों नहीं लिया सिस्टम से लॉगिन? I'm working on laptop. हम्म? Sorry, sir, because I am working on laptop, so I'm Your not able to. okay. Yes, I have some urgent work. All right. Pankaj, Peter. No, sir, I'm live mobile. Logged in with mobile. Yes. Okay. Do one thing. We don't have to be logged in with your system to do this. Write these configurations of these routers, like I have written here. Just like this. Give the heading of the router, write all the commands, whatever you will configure in these routers, and send it to me in the chat box directly. Understood? All the commands, write it properly in a notepad or in your notebook, for example. After that, take a screenshot and send it to me directly in the chat box. Remember, gateway 1, router 0, router 2, you are doing EIGRP. Router 1 and gateway 2, you are doing static routing. And router 3, you are doing default routing. Do this. Basic IP configurations already you know, so it should not be taking too much amount of time, because on these 2 routers you are doing static routing. So over there, I'm seeing just a little bit of time, like 5 to 10 minutes should be there for you to configure it. But rest of the things, very simple, straightforward configurations. Complete it. I'm giving you the time, 15 to 20 minutes to complete it. 15 to 20 minutes.
send me the configurations directly in the chat box. And make sure that you give the heading first. Then you write the commands. Right. So do it fast.
Hello, sir. Hello, sir. Yes, Daya. Sir, actually, I left 2 or 3 classes, sir. So I install Cisco packet tracer and I log in to laptop. Yes, you do the project then. Set up the No, project. no, sir, I can't do, sir, because I left 2 or 3 days classes. Okay. Then you Because discuss with your recruiter regarding this. Okay. yes, sir, because of, sir, I am in train before 2 days, sir. Discuss with your recruiter Okay, regarding sir. this. I am doing, sir, but Okay. I'm Uh, trying. If do you have time, sir, then guide me, sir. yes, you will have to do it. Okay. You just do one thing. Write all the configurations and send it to me in the chat box. Yes, Asif is there. Asif. Yes, sir. Yes. Another interface configuration is there, na? Yes, sir. In gateway Actually, one. I'm One making the project right now, but I'm no, one facing an one issue, zero sir. four point one. This Okay. interface is there. Yes. Okay. So add this in EIGRP as well. Okay. Sir, may I share the screen? Write the configurations and No, send no. it to me. I will write. I will write, but Mhm. I have issues, so that's why I'm asking. Okay. In this project. Yes, sir. In this making the project. Okay. Share it. Okay. स्क्रीन शो हो रहा है सर मेरा? हेलो. Yes. ओके. Your screen is visible. Go on. Tell me. यहाँ पे जब मैं ये सेकंड बॉक्स बना रहा हूँ सर, तो इसमें कलर नहीं आ रहा है. जैसे कि ये येलो कलर किया, ऑरेंज कलर किया, तो यहाँ पे कलर नहीं आ रहा है. हाँ, ये बॉक्स सिलेक्ट करो फिर से. ओके. ठीक है. अभी कलर कलर तुम इधर से चूज करो. सिलेक्ट फिल कलर. चूज करो अपना कलर. ये कोई ओके कैमरा करो. ऑन कर रखा है सर, ये कोई कैमरा ऑन कर रखा है सर, इससे डिस्टर्ब हो रहा है बार बार. अच्छा रुको. यस, थैंक यू. हेलो. हेलो सर. हाँ कलर रुको नहीं आ एक रहा है मिनट एक मिनट रुको. हम इसको इसको डिलीट करो इसको. हाँ सिलेक्ट करो अभी बॉक्स. सिलेक्ट करो कलर. ये कलर सिलेक्ट करके ओके प्रेस करो. हाँ अभी ये शेप सिलेक्ट करो. अभी ड्रॉ करो बॉक्स. आ रहा है अभी. सर. हाँ, मतलब ये बॉक्स अगर मैं कट कर देता हूँ तो कलर नहीं आएगा? नहीं हो. ये तुम्हें बॉक्स ओपन रखना है. ठीक है. ओके. और उसके बाद जो जितना भी बॉक्स बनाने हैं बना लो. हाँ, ठीक है. ठीक. गॉट ठीक इट. है. थैंक हाँ और किसको डाउट है. सो मुझे, मैं शेयर करूँ हाँ क्या अपनी स्क्रीन? हाँ करो.
हाँ बोलो। सर ये जो है ना, हम्म। यहाँ पे मैंने इसका तो RIP कर दिया है कॉन्फ़िगरेशन, हम्म। जिसकी वजह से तो कनेक्ट हो रहा है एक दूसरे के साथ, ठीक है। हम्म। लेकिन मैं इसको कर रहा हूँ राउटर 3 को हम्म। डिफॉल्ट में। ये क्या हो गया? जब मैं इसे डिफॉल्ट में करने जा रहा हूँ ना सर, तो यहाँ पे लास्ट, क्या बोलते हैं, लास्ट रिजॉर्ट इज नॉट सेट, ऐसा करके आ रहा है। जैसे अभी ये CLI में होगा अभी ये, मुझे भी सेम प्रॉब्लम आ रहा था सर इसमें। समझ में नहीं आ रहा है। ये जैसा प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट लास्ट पे करेंगे। ये ठीक है। RIP और ये वाला लास्ट पे करेंगे। अभी जो प्रोजेक्ट मैंने दिया है वो करो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ठीक है। वो सर फर्स्ट। कमेंट मैंने। हाँ, कमेंट सारे लिख के मुझे भेजो।
हेलो सर, यही वाला ना जो मैंने आपको अभी सेंड किया? रुको, ये क्या सेंड कर रहे हो? सर मैं डाउनलोड करके मैं ये वाला पूरा प्रैक्टिस कर लूंगा सर, आज आज कल कल में। ये तो दूसरा वर्जन लग रहा है सॉफ्टवेयर का। तो सर लेटेस्ट इसका, वर्जन डाउनलोड किया शायद। यस सर, तो आप लिंक भेज दो सर एक बार इसका मेरे को। वो लिंक, कुछ कोई दिक्कत नहीं, इधर पे तुम्हें मिल जाएगा, मिल जाएंगे ये ऑप्शंस। ये 2811 राउटर तुम्हें इधर से मिल जाएगा। सर और वो ये नहीं मिल रहा ना, बॉक्स वगैरह जो आपका साइड में है सर, वो नहीं मिल रहा बॉक्स इसमें। बॉक्स इधर पे मिल जाएगा। ओके, अपना स्क्रीन शेयर करो, मैं बताता हूँ। ओके सर। स्क्रीन स्क्रीन शेयर करो।
Recording in progress. Yes, Abhinav is there. Abhinav, Yes, sir. कॉन्फ़िगरेशन तो तुम्हारा गेटवे 1 का ठीक ही लग रहा है। राउटर 0 का हाँ, राउटर 0 का भी ठीक लग रहा है। और राउटर 2 ये जीआरपी हाँ ठीक ही है। राउटर 1 एनेबल कॉन्फ़िग ठीक है। होस्ट अच्छा, होस्ट नेम तो राउटर 1 होगा ना, राउटर 0 क्यों लिख दिया? हाँ सर, वो गलत हो गया सर, वो डबल भेजा फिर करेक्ट करके। अच्छा, 0/0 पे 101.2 में शटडाउन ठीक है। 0/1 102.1 वो भी ठीक है। अभी राउटिंग तो गलत हुआ। ये क्या स्टैटिक राउटिंग किए हो अभिनव? अच्छा। राउटर 1 का स्टैटिक राउटिंग गलत है। राउटर 1। राउटर 1 का गलत स्टैटिक राउटिंग किए हो। गेटवे 2 का भी स्टैटिक राउटिंग गलत हुआ है। आईपी एड्रेस करेक्ट है लेकिन स्टैटिक राउटिंग ठीक करो। ओके सर। शांतनु, स्टैटिक सर राउटिंग ठीक नहीं हुआ। राउटर 1 का स्टैटिक राउटिंग कैसे ये हो गया? अच्छी तरीके से देखो, टोपोलॉजी देखो अच्छी तरीके से। स्टैटिक राउटिंग जब करते हो तो क्या क्या चीज ध्यान में रख के करना चाहिए वो याद करके कॉन्फ़िगरेशन करो। उस, उ, उस
Ush, Ushanji. Ushanji is there. Yes, sir. Ushanji. Yes, come in. You have sent these configurations, right? HLP gateway one configuration 104.1. Only one interface is there. Gateway one, you were having three interfaces connected, right? 0/0, 0/1, and 1/0. In your configuration, you have written only 1/0. The HLP configuration is also not good. First of all, you have to configure all the interface, the port numbers. Okay. And IP address, giving no shutdown. After that, only whichever router you need to do static routing or default routing or DHRP, you need to configure that. So that configuration is not good. Check the configurations. Hello, sir. Tell me. Tell me. Go on. Yes. Anyone else have completed? Send me the configuration fast. Hello, sir. Tell me, Ushanji. Sir, please explain to the how to take the IP and port. I don't understand that one, sir. See that configuration of gateway one? How we are configuring it? First IP address, right? Yes, sir. Then subnet mask, no shutdown, exit. Then interface, faster than 0/0, then IP address, no shutdown, exit. Like that. This is your 1/0. So you write interface 1/0, then IP address 104.1, subnet mask, no shutdown, exit. First of all, you configure all the interface, then you configure EHRP. Like that. Got it? Oh, okay. All the interface first you configure with the IP address. You can see that I have configured two interface. After that, I have added this new one, right? So this Yes. new one also, you write it like this: interface FA 1/0, IP address 192.168.104.1,
subnet mask is 255.255.255.0, no shutdown, exit. Then you write EIGRP. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Finished? क्या हुआ? अभी तक नहीं हुआ? ऑलराइट। सबसे पहले क्या, गेटवे 1 के कॉन्फ़िगरेशन है, राइट? तो गेटवे 1 सबसे पहला कमांड एनेबल कॉन्फ़िग टी। होस्ट नेम क्या आएगा? गेटवे 1। इंटरफेस क्या है? 0/1 IP 192.168.100.1 सबनेट मास्क ये। फिर नो शटडाउन, एग्जिट। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ 2 बार, क्योंकि 2 इंटरफेस, टोटल 3 इंटरफेस हैं।
तो एक तो 0/1 हो गया, और ये 0/0 1/0 के लिए ये रहे 0/0। इसका आईपी है 101.1, और ये है 1/0, और इसका आईपी है 104.1। बस हो गया मेरा आईपी कॉन्फ़िगरेशन। अब ये एचआरपी कॉन्फ़िगरेशन का राउटर, ये एचआरपी कौन सा भी नंबर ले लो, 65,001 नेट 192.168 100.0 सबनेट मास्क है ये। इसी लाइन को मैं दो बार कॉपी कर देता हूँ, क्योंकि तीन नेटवर्क कनेक्टेड है, एक है 100, एक है 101, और एक है 104। तो इसको कर दो 3 बार, बस हो गया। नो ऑटो समरी, एक्सेप्ट। बस ये तुम्हारे ये एचआरपी के कॉन्फ़िगरेशन हो चुके हैं। अभी राउटर 0 के कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, क्योंकि ये तीनों राउटर पे हम लोग ये एचआरपी यूज कर रहे हैं। तो इसी के कॉन्फ़िगरेशंस में कॉपी कर देता हूँ, और ये मेरे राउटर 0 के कॉन्फ़िगरेशंस हो जाएंगे। राउटर 0, तो सबसे पहले एनेबल कॉन्फ़िग होस्ट नेम आ जाएगा राउटर 0। फिर इंटरफेस 0/1 पे 105.1 आईपी है, तो इसको मैं 105.1 कर देता हूँ। 0/0 पे 104.2 है, तो इसको 104.2 कर देता हूँ। और 1/0 पे 106.1 है, तो इसको मैं 106.1 कर देता हूँ। बस ये मेरा आईपी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी ये इधर भी सेम प्रोसेस, मतलब ऑटोनोमस सिस्टम नंबर सेम आएगा। ये तीन नेटवर्क से कनेक्टेड है, लैन 5, लैन 6 और लैन 7। तो ये आ गया लैन 5 का नेटवर्क आईडी 104, लैन 6 का नेटवर्क आईडी 105, और ये आ गया लैन 7 का नेटवर्क आईडी 106। बाकी सारे सेम ही रहेंगे, नोट समरी एग्जिट खत्म हो गया। अभी राउटर 2, इस राउटर पे एक ही इंटरफेस है, तो हम लोग इसी के कॉन्फ़िगरेशन एक ही इंटरफेस तक कॉपी कर देते हैं, एंड सिंपली जस्ट पेस्ट इट विथ राउटर 2। होस्ट नेम आ जाएगा राउटर 2, 0/0 है, तो 0/0 करो। आईपी एड्रेस है 105.2, तो इसको 105.2 कर दें। और EIGRP कॉन्फ़िगरेशन में एक ही लाइन कॉपी करता हूँ, क्योंकि एक ही नेटवर्क कनेक्टेड है, तो इधर से पेस्ट कर देता हूँ। नेटवर्क आईडी आ जाएगा 105, जो कि राउटर 2 से कनेक्टेड है, सो दैट इज 105। और नो टू समरी एग्जिट कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ इधर। बस ये राउटर 2 के कॉन्फ़िगरेशन हो चुके। ओके, ये तीनों राउटर्स के कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने कर लिए। अभी राउटर 3 के कॉन्फ़िगरेशन, इस पे भी एक ही इंटरफेस है, जैसे राउटर 2 पे है इस पे भी है, लेकिन इसमें हम लोग डिफॉल्ट राउटिंग कर रहे हैं। ओके, ये वाले राउटर पे, तो इस वाले राउटर पे जाते हैं, राउटर 3। सिर्फ ये एचआरपी को छोड़ के बाकी सारे सब कुछ कॉपी कर देते हैं, और इसका नाम दे देते हैं राउटर 3। होस्ट नेम आ गया राउटर 3। इंटरफेस देख लो कौन सा इंटरफेस है, 0/0, उस पर आईपी लगा हुआ है 106.2, तो 0/0 106.2। और डिफॉल्ट राउट, तो डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करने के लिए आईपी रूट 0.0.0.0 0.0.0.0, और हम लोगों का नेक्स्ट हॉप एड्रेस है 106.1। क्योंकि कौन सा भी नेटवर्क लैन 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो या 6 हो, कौन सा भी नेटवर्क पे जाने के लिए यही डायरेक्शन हम मेरा लेफ्ट साइड की तरफ है, तो लेफ्ट साइड पे यही राउटर 106.1 है, तो इसका आईपी डाल देता हूँ। बस ये हो गया मेरा डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन। अभी राउटर वन पे दो इंटरफेस हैं, तो मैं दो इंटरफेस वाले जो राउटर्स हैं, जैसे कि गेटवे 1 पे दो इंटरफेस हैं, तो इसका कॉपी कर देता हूँ कॉन्फ़िगरेशन नीचे, राउटर 1 कॉन्फ़िगरेशन, इसको हटा देता हूँ, और ये एनेबल कॉन्फ़िग टी, होस्ट नेम आ जाएगा तुम्हारा राउटर 1।
इसका 0/1 पे 102.1 है, तो इसको चेंज करके 102.1 कर दो। 0/0 पे 101.2 है, तो 0/0 पे 101.2 कर दो बस। ओके। एंड सेम चीज हम लोगों को गेटवे 2 पे करना है, तो सेम चीज ये बेसिक आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं बस। गेटवे 2 पे भी सेम, तो होस्ट नेम इसका आ जाएगा गेटवे 2। इसका 0/1 पे है 103.1, तो चेंज कर दो आईपी, और 0/0 है 102.2। बस किस दोनों के बेसिक आईपी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, तो अभी स्टैटिक राउटिंग करना है राउटर 1 और गेटवे 2 पे, तो दोनों पे हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा नेटवर्क नॉट कनेक्टेड है। ओके, तो राउटर 1 के पर्सपेक्टिव से ये राउटर 1 ये लैन नंबर 2 के साथ कनेक्टेड है और लैन नंबर 3 के साथ कनेक्टेड है। मतलब लैन 1 से कनेक्टेड नहीं है, लैन 6 से कनेक्टेड नहीं है, लैन 5 से कनेक्टेड नहीं है, ओके, लैन 7 से कनेक्टेड नहीं है और लैन 4 से कनेक्टेड नहीं है। तो अगर मुझे राउटर 1 से लैन 1 पे जाना है या लैन 6 पे जाना है या लैन 5 या लैन 7, तो मेरा डायरेक्शन होगा ये लेफ्ट साइड का आईपी ये है। और अगर मुझे लैन 4 पे जाना है डेस्टिनेशन, तो मेरा आईपी होगा ये 102.2। तो इसी को मुझे लिख लेना है इधर, ये राउटर 1 है, तो इसका इधर पे डाल देता हूँ लैन नंबर 1, लैन नंबर 5, लैन नंबर 6, लैन नंबर 7। ओके, और ये लैन नंबर 4, लास्ट पे लैन नंबर 4 लिखते हैं, क्योंकि ये लैन नंबर 4 का डायरेक्शन राइट साइड की तरफ है, ये चारों लेंस का डायरेक्शन लेफ्ट साइड की तरफ है। तो लैन 1 के नेटवर्क आईडी लिख देते हैं 100.0, और नेक्स्ट ऑफ आईपी लिख लेते हैं 101.1। फिर यही लाइन में कॉपी कर देता हूँ 3 बार। और नेटवर्क आईडी चेंज कर देता हूँ, लैन 5 का नेटवर्क आईडी है 104, लैन 6 का है 105 और लैन 7 का है 106। नेक्स्ट ऑफ आईपी मेरा सेम रहेगा क्योंकि डायरेक्शन लेफ्ट साइड की तरफ है। लैन 4 पे लैन नंबर 4 जो कि 103 है, इसका डायरेक्शन राइट साइड की तरफ है, तो राइट साइड पे ये मेरा नेक्स्ट ऑफ आईपी है 102.2। तो सारे नेटवर्क्स हम लोगों ने डाल दिए। अभी सेम चीज हम लोगों को गेटवे 2 के लिए करना है। तो गेटवे 2 पे सिर्फ यही 2 लेंस कनेक्टेड है, 1 2 3 4 5। ये 5 लेंस कनेक्टेड नहीं है, लैन 1 2 5 6 7। तो ये 5 लेंस के इंफॉर्मेशन हम लोगों को डाल देना है। तो यही मैं कॉपी कर देता हूँ इधर पे, और एडिट कर देता हूँ। ओके, सो कौन कौन सा लेंस है गेटवे 2 से नॉट कनेक्टेड, लैन 1 लैन 2, तो ये रहा लैन 1 नेटवर्क आईडी, ये रहा लैन 2 नेटवर्क आईडी है 101। फिर लैन 5 6 7, तो ये रहा लैन 5 दैट इज 104, लैन 6 दैट इज 105 एंड लैन 7 जो कि 106 है। तो इन सारे नेटवर्क पे जाने के लिए डायरेक्शन मेरा लेफ्ट साइड की तरफ है, और डायरेक्शन है 102.1 की तरफ राउटर 1, तो इसका नेक्स्ट ऑफ आईपी 102.1। दैट्स इट। ये हो गए तुम्हारे सारे राउटर्स के कॉन्फ़िगरेशंस। अंडरस्टूड हाउ वी आर डूइंग इट। यस सर। बस यही है, ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन करना है टोपोलॉजी ये देख देख के। सर ये चैट में डाल दीजिए एक बार। चैट में सारे कॉन्फ़िगरेशंस डालते हैं। हाँ ठीक है, ओपन करो चैट बॉक्स। ओके। यस सर। नहीं, मैसेज बहुत ही लंबा हो रहा है, वो मैसेज नहीं जा रहा है।
एक काम करो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लेते। ये लो गेटवे 1 का। ये Yes, कॉन्फ़िगरेशन sir. ये कॉन्फ़िगरेशन करके देखो। ओके, ये Yes, sir. कॉन्फ़िगरेशन पे एक प्रॉब्लम आएगी तुम्हें इस कॉन्फ़िगरेशन से भी। ओके, वो प्रॉब्लम क्या है वो मुझे नेक्स्ट सेशन पे बताओ। ओके, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन पे भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा, कम्युनिकेशन नहीं होगा ठीक तरीके से। ये मुझे करके बताओ नेक्स्ट सेशन पे। टेकन द ओके सर, स्क्रीनशॉट। यस टेकन। राउटर 2, राउटर 2 और राउटर 3, Yes. टेकन। ठीक है। उसके बाद राउटर 1 Yes, sir. और गेटवे 2, लास्ट राउटर, टेकन सर। ठीक है। अभी अभी लास्ट प्रोजेक्ट जो है वो, उस पे किसको प्रॉब्लम आ रहा था, आरआईपी और स्टैटिक राउटिंग के प्रोजेक्ट पे? समवन हैज शेयर्ड ना अर्लियर, ऋषिकेश। हाँ सर। ऋषिकेश। हाँ हाँ सर। हाँ, ठीक है, वो तुम अपना प्रोजेक्ट शेयर करो, क्या प्रॉब्लम है देखते हैं। सर इस पे ना मैं हम्म डिफॉल्ट राउटिंग कर रहा था हम्म इस पे, तो जैसे अभी ये किया मैंने इनेबल। ये कुछ भी नहीं दिख रहा, तुम अपना फुल स्क्रीन शेयर करो। ओके, क्लिक ऑन द स्टॉप शेयरिंग बटन एंड अगेन शेयर स्क्रीन, सिलेक्ट द स्क्रीन ऑप्शन, स्क्रीन ऑप्शन सिलेक्ट करो। हाँ, नाउ ओपन इट। सर अभी 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 दिख रहा है सर। हाँ, अभी दिख रहा है। राउटर 3 ओपन करो अभी। हाँ, हाँ। इस पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन किए हो? हाँ सर इस पे किए है। अच्छा, ठीक है। सर पहले किया था इस पे, लेकिन उसके बाद वन वो जीरो दिखा रहा फोर है कि पॉइंट जो 104.1 डाले हो तुमने आईपी, दोनों जगह पे 104.1 डाल दिया ना? पर तो सर 104.1 है। नहीं, और यहाँ तुम्हारे राउटर पे तुमने जो आईपी डाला है वो सेम आईपी डाल दिया 104.1 दोनों जगह पे शायद। चेक करना ऊपर आईपी एक बार। यहाँ पे वो सर। हाँ, इसका आईपी चेक करो ना। यहाँ पे तुम 104.1 है नीचे। ऊपर सर मैंने हाँ, वन, हाँ, यहाँ पे एक काम करो, अपना जो माउस का कर्सर है वो गेटवे 1 के ऊपर प्लेस करो उसका, गेटवे 1 के ऊपर रखो उसे। क्लिक नहीं करना है, जस्ट माउस को रखो उसके ऊपर। आईपी कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है? हाँ 1/0 पे क्या आईपी यहाँ कॉन्फ़िगर पे किया भी हो? सेम है सर, सेम है 104.1। सर। हाँ, 104.1 है। 104.1 तुमने कॉन्फ़िगर किया ना इधर, वो नीचे वाले जो राउटर हैं उस पे भी सेम आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया, इसी वजह से नहीं हो रहा है। ओके, इस पे ये करो, माउस रखो उसके ऊपर, ये देखो 104.1 दिखा रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ सर ठीक है ठीक हाँ, है, तो समझ आया। तुम्हें क्या करना है, आईपी को डिलीट करना है। ओके, उस वाले इंटरफेस पे जाओ, क्लिक करो राउटर पे। हाँ, टाइप करो कॉन्फिग टी। अभी इंटरफेस FS0/0 0/0, give no space IP space address, no हेलो। no no नो space IP आईपी space address एंड एड्रेस। प्रेस एंटर, एंटर प्रेस कर दो। इससे तुम्हारा आईपी जो है वो डिलीट हो जाएगा। अभी करेक्ट आईपी कॉन्फ़िगर कर दो। आईपी एड्रेस 192.168.104.2, 104.2, then subnet mask 255 .0, ठीक है। फिर नो शट डाउन देने का जरूरत नहीं है क्योंकि पोर्ट ऑलरेडी ग्रीन है, राइट? तो एग्जिट कर दो। अभी वो डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करो उस पर।
नहीं नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर पे कमांड डालो, एग्जिट, एग्जिट कमांड डालो। कॉन्फ़िग से नहीं बाहर है। क्लिक करो, राउटर 3 पे क्लिक करो, एग्जिट कमांड डालो। Exit. अभी वो डिफॉल्ट राउट जो कॉन्फ़िगर कर रहे थे, राइट, वो कॉन्फ़िगर करो। जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो, नहीं 5 जीरोस हो गए, 5 जीरोस हो गए। हाँ, 4 जीरोस देना, हाँ। और उसके बाद 192.168.104.1। हो गया ना? अभी हो गया सर। ठीक है, तो यही है, दिक्कत यही था, तुम्हारा आईपी जो है तुमने दोनों इंटरफेस पे, दोनों राउटर के सेम आईपी कॉन्फ़िगर कर दिए थे। ठीक है, ऑल राइट, ओके, ठीक है सर। यू कैन स्टॉप योर शेयर नाउ। All right, everyone. So in the next session, we're going to discuss about OSPF and access control list, ACL. ये दोनों कॉन्सेप्ट देखेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, और ये जो EIGRP वाला जो प्रोजेक्ट है, ओके, स्टैटिक राउटिंग के साथ वो करके लाओ। कॉन्फ़िगरेशन तो मैंने दिया है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ दिक्कत, प्रॉब्लम हो, मतलब प्रॉब्लम आएगी उस कॉन्फ़िगरेशन पे। वो क्या प्रॉब्लम है, वो बेसिकली करके मुझे नेक्स्ट सेशन पे बताओ। सर ठीक है, नोट्स होगा सर प्रीवियस 2 दिन का? लास्ट 2 सेशन के नोट्स कल मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन जो भी है मुझे याद कर देना। ओके सर। ऑल राइट, सो go through all the things what we have discussed today and do project and show it to me in the next session. ठीक है, ओके सर। all right, so I will see you guys in the next session. Bye, take care, good night all of you. ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर।